way, whenever we talk about the bone of the human body, we are having total 126 bone on in the side, that is called appendicular skeletal system. The 80 bones in the center, that is called axial skeletal system. So axial and appendicular together are called the whole body system. तो हम देख सकते हैं एक बार फिर से. So the 80 bone in the center and 126 bone on the sides. The 80 bone are the part of the axial skeletal system. The meaning of axial, who is making the axis, जो हमारे सेंट्रल की एक्सिस बनाता है. Skull and spinal cord, and some other part like the ear, like the throat. और जो साइड में है वो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है. आर्म एंड लेग्स, दे आर हैविंग 126 बोन. आर्म, लेग, गर्डल्स, राइट. तो उन्हें हम कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. वी कैन सी दिस इमेज. So we can see how the beautiful all the spine arranged with each other. The upper cervical vertebra and the lower cervical vertebra arranged with each other. So what are the name of these all structures? इन सब के नाम क्या होते हैं? कहां से नर्व गुजरती है? कैसे कंप्रेशन होता है? We should have the idea. So whenever we talk about the central part, जब हम central part की बात करते हैं, so this is the central part. This central part with the skull, with the ear, with the throat, all the bone of the central part are the part of axial skeletal system. Axial skeletal system. And the remaining part who is on the side, ये जो side वाला भाग है, these are parts on the sides. And with the legs and the arm are the part of appendicular skeletal system. So right now our focus is this vertebral column. अभी हम इसकी बात करने वाले. Now if we look at the vertebral column, अगर हम vertebral column को देखें, so there are total 26 bones and 33 vertebrae. The upper bone is C1, then C2, then C3, then C4, 5, 6, and 7. There are total 7 cervical vertebrae. कुल 7 cervical vertebrae होती हैं. What is the difference between cervical vertebrae and the other vertebrae? अगर आपके सामने एक cervical vertebra रख दी जाए और आपके सामने एक thoracic vertebra और एक lumbar vertebra रख दी जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे? How will you recognize the cervical vertebra? आप कैसे recognize करेंगे? So I will tell you, it's very simple. We can see the structure of the cervical vertebra is very unique. आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं bifid. Most of the cervical vertebra bifid. I will tell you whichever is not bifid. पीछे देख रहे हैं, ये दो भाग में फटी हुई. Can you see this? Can you see this cervical vertebra? कि दो भाग में फटी हुई है ना, bifid. ये सर्वाइकल ही होगी, थोरेसिक नहीं होगी और लंबर भी नहीं होगी. अभी तो आप लोग बड़े हो गए, जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ये क्वेश्चन पूछते थे, पहचानो कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा है. सो देयर आर टू साइन वी कैन रिकॉग्नाइज दैट इज द सर्वाइकल वर्टिब्रा. आपके सामने मैंने रख दी, पहचानो, चलो सर्वाइकल कौन सी है. एक थोरेसिक रख दी, एक लंबर रख दी, सर्वाइकल रख दी. So there are two very prominent signs in the cervical vertebrae. Number one,
इट इज बाइफिड। बाइफिड मतलब पीछे से, ये पीछे का भाग है, बैक साइड। इट इज बाइफिड, दो भाग में फटी हुई, बाकी कोई फटी हुई नहीं है। देखो ये फटी है क्या, ये पीछे का भाग एक ही, और ये देख लो ये दो भाग में फटी हुई, ये कोई एक ही भाग में है, ये लंबर वर्टिब्रा है। द सेकेंड साइन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके बगल में दो छेद होते हैं, बाकी बीच का छेद तो सब में होता है, ये बगल वाले छेद सब में नहीं होते। द होल ऑन द साइड्स यू विल नॉट फाइंड एनी इन एनी वर्टिब्रा अदर देन सर्वाइकल। Very important, because from these holes something is passing. When this is getting compressed, the patient is having problem. जब आपके सामने पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है ना, तो आपको यही पता होना चाहिए कि in the report it's written compression on the vertebral artery, so you should have the idea it is passing from where, something passing from here, something passing from here somewhere, right? So we should have the idea कि which structure passing from where. So there are total 7 cervical vertebrae. हमारे स्पाइन में कुल 7 cervical vertebrae होती हैं। All are bifid, जितनी भी हैं सब bifid हैं, we can see। केवल ऊपर वाली नहीं है, C1 C1 नहीं है bifid, बाकी C2 bifid, C3 bifid, C4 bifid, 5 6, और सबसे नीचे वाली नहीं है, सबसे ऊपर और नीचे की नहीं है, बाकी सब हैं bifid। Now if you go in the thoracic vertebra, no one is bifid, कोई भी bifid नहीं है, देखो no one is bifid। If you go in the lumbar vertebra, कोई भी bifid नहीं है, कोई भी bifid नहीं है, right? This is the sign of vertebra, ये vertebra का sign है, got it? Yeah। So in this way, whenever someone is having neck pain, the person is suffering with various problems, उस व्यक्ति को कई प्रॉब्लम हो सकती है। So before discussing this, I will tell you here, in the cervical we are having 7 vertebrae, C1 to C7, that everyone knows, लेकिन we are starting because this is a day 1, so I will tell you all the basics। In the thoracic vertebra we have total 12 vertebrae, कुल 12 vertebrae, T1 to T12। In the lumbar vertebrae there are total 5 vertebrae, lumbar में 5 होती है, thoracic में 12। और फिर हम चले जाए नीचे, सबसे नीचे देखिए, इट्स ए वेरी वंडरफुल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, ये सैक्रम है, सबसे नीचे का पार्ट क्या है, सैक्रम है। सैक्रम में कुल कितनी वर्टिब्रास होती है, सैक्रम वाले पार्ट में सब मिलकर एक बन जाती है, 5 मिलकर एक बन जाती है, तो एक ही गिनते हैं, वी आर काउंटिंग ओनली 1। इन द लास्ट देयर इज अ टेल बोन, द 4 गेटिंग फ्यूज्ड एंड बिकमिंग 1, 4 के 4 फ्यूज होकर एक ही बन जाती है। तो गिनिए जरा कितनी हुई, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर,
one sacrum and one coccyx. How many vertebrae total? Count quickly. काउंट करिए, बताइए। ये बहुत ही बेसिक है, सबको पता है। इफ यू नो दिस वर्टिब्रा 26। ओके नाउ, जब वर्टिब्रा फ्यूज नहीं हुई थी, अभी वर्टिब्रा फ्यूज हो गई, वी आर टेलिंग देम बोन्स। प्रीवियसली देयर वर 5 sacrum, all get fused and becoming one. So now we can see here, अब हम sacrum को देखते हैं। If we look at the sacrum here, sacrum के पीछे you will see something, ये sacrum, इसके पीछे आप देखेंगे अभी भी स्पाइनस प्रोसेस के उभार बने हुए हैं। स्टिल देयर इज ए सम एलिवेटेड पार्ट ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, कि पहले थे अब फ्यूज हो गए, पहले कुछ उभार जैसे थे अब फ्यूज हो गए। सो वी कैन सी द सैक्रम हियर, ये हमारा सैक्रम है। स्टिल वी कैन सी सम एलिवेटेड प्रोसेस, कि पहले यहां पर ऐसे उभार जैसे थे। देखिए ये दी ऑल आर स्पाइनस प्रोसेस, नाउ दे हैव गॉट फ्यूज्ड, राइट। इवन इफ वी गो इन द कॉकिक्स, टेलबोन में भी हम जाएं, so there are 4 bones, we can see marks of the 4 bones। तो 4 हमारी कॉकिक्स में थी, there are 4 vertebra in the coccyx, 5 vertebra in the sacrum। if we count the vertebra, अगर हम vertebra को काउंट करें तो कितनी होंगी? let's count here। bone, we will count bone one side and vertebra other side। in the cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx। in the cervical 7 vertebrae, in the thoracic 12 vertebrae, in the lumbar 5 vertebrae। So 7 vertebra, 12 vertebra, 5 vertebra, they are called vertebra as well as the bones। in the sacrum there are 5 vertebrae, but they become one, they are getting fused and becoming one bone। So they become one due to fusion। in the coccyx there are 4 vertebra, they also become one due to fusion। So now we can count, if we count the bone will be 26। but the how many vertebrae? if we count, then how many vertebrae? Can you count it? क्या आप काउंट करके बता सकते हैं? the how many vertebra is still there in the spine? So there are 33 vertebrae in the spine। now the most of the surgery, most of the problems happening because of the spine, and if you learn that how to treat the spine, you are a master, because in a clinic you just write, you treat the spine, you do the mastery on the spine, you will never be free, because in every home you will find a patient of spine। हर घर में आपको स्पाइन के पेशेंट मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे ना? spine pathology is very common। so like quickly I will show you the name of spine pathology। there are very common pathology which is connected to the spine। few name of the common pathology which we are going to learn very properly। so now
First, I am showing the spine pathology. Then we are coming back to this our previous discussion. We know this is the problem that is called scoliosis. We can see the spine. In the first image, we can see the vertical spine. हम पहले इमेज में देख सकते हैं कि हमारी स्पाइन सीधी सीधी है. Then we can see how the spine is getting curved. स्पाइन कहां पर कर्व हो रही है? इसके ऊपर इसका नाम है. On the which point spine is getting curved. In the first image, we can see healthy spine. So first thoracic स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस का मतलब है स्पाइन का साइड में कर्व हो जाना. If it is getting curved in the thoracic area, it is called thoracic scoliosis. If it is getting curved in the lumbar area, it is called lumbar scoliosis. दोनों में भी हो सकती है. It might be happening at both places. Thoracolumbar scoliosis. And combined, one side going in one direction and other side going in other direction, that is a combined scoliosis. It is a very common problem we can see nowadays. The other disharmony that is called kyphosis. Kyphosis का मतलब है आगे की ओर झुक जाना. So we can see this is in the first image the natural curve of the spine, but in the second image we can see how the thoracic spine become getting more curved. So that is called kyphotic spine. इसे हम कहते हैं काइफोसिस. काइफोसिस का मतलब है पीछे कुवड़ जैसा निकल जाना. काइफोसिस जैसे ऊंट के कुवड़ निकलता है. ऊंट को देखा है ना? In the camel we can see the bulge. In the same way, thoracic spine is becoming more kyphotic. So nowadays this problem is also very common because of more mobile use. लोग बैठकर मोबाइल यूज करते हैं, स्पाइन ऐसे करते हैं ना. So many people are suffering little or more with kyphosis. It's very common nowadays. So we have to identify and we have to treat immediately. Otherwise, they will be suffering with the pain in the different spine area. Now, this is a very common problem. All the person having big belly are suffering with this problem in the lumbar spine. जिनका भी पेट निकला हुआ है उनको ये प्रॉब्लम मिलेगी. This is called lordosis. We can see this in the first image. There is a natural curve of the lumbar spine. पहली इमेज में हमारी lumbar spine का natural curve है. But in the second image, it's becoming more. Why? Because big belly is here and it's pulling it forward. बढ़ा हुआ पेट इसे आगे खींच रहा है. So that is called lordotic spine. So why the pregnant lady getting lower back pain? Because of big belly, because of pregnancy, big belly pulling the spine in lordotic condition. In the same way, if any male not pregnant is still having big belly, it is same like pregnant lady. So it is pulling the spine in the front part, suffering with the lower back pain. We can correct this lordotic spine with the proper treatment. हम इसे भी ठीक कर सकते हैं, right? So this is called lordosis या hyperlordosis कि lordosis का बढ़ जाना. और इसे कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस. ये किसको होती है? नेचुरली किसको होती है? प्रेग्नेंट लेडी को. और अननेचुरली किसको होती है? हु इज सफरिंग अननेचुरली? द पर्सन हैविंग बिग बेली, राइट? दैट इज कॉल्ड परमानेंट प्रेगनेंसी. वाह, वेरी नाइस. हमारे फ्रेंड चिढ़ाने के लिए बोलते हैं हम लोगों का पेट निकला है ना बाहर थोड़ा थोड़ा, तो कहते 2 महीने 2 मंथ बेबी इनसाइड. 2 मंथ 3 मंथ.
If you do exercise slowly, the 3 month will become 2 months, then 1 month, then baby will disappear. That is called lordosis. So herniated disc, what is the herniation? So we can see in this image, हम इस इमेज में आपको दिखाएंगे, एक दूसरी इमेज भी दिखाते हैं भी, कि हमारी स्पाइन में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, herniated of the disc. For example, I will show you one image here. Look at here. अभी हम इन चीजों को धीरे धीरे समझेंगे. So this is the vertebra. ये हमारी एक वर्टिब्रा है. We can see. This is the lumbar vertebra. And in the upper part of the lumbar vertebra, we can see this is the disc. ये हमारी disc है. Disc is having two parts. Nucleus in the center, and this is the outer part of the disc. हमारे डिस्क के दो भाग होते हैं. अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर ये गोला होता है, चक्कर होता है. So the nucleus is called nucleus pulposus. Now we can see how the nucleus is going out from the side due to wear and tear, due to sudden jerk, due to trauma, due to accident, due to sudden irregular poses. हमारा कैसे ये डिस्क बाहर निकल गया है, इसी को कहते हैं herniated disc. It will do the compression. So when the patient is coming to you, you should have the idea. तो जितने कायरोप्रैक्टिक भी है ना, अगर उन्हें नहीं पता ये और उन्होंने गलत प्रैक्टिस कर दी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. Okay, so you should have the proper idea. Even if you are doing acupuncture, you should have the idea, oh, this person is suffering with the herniated disc. So where should I put the needle? So swelling reduces. कहाँ मैं needle लगाऊं ताकि सूजन कम हो जाए. So when disc is coming out, this is called herniated disc. इसे हम herniated disc कहते हैं. Again, I will tell you, I am telling you very quickly, but these things I will tell you in the detail. Then spinal stenosis. So what is the spinal stenosis? आखिरकार स्पाइनल स्टीनोसिस क्या होती है? स्टीनोसिस का मतलब होता है गला घोंटना, गला दबाना. That is the meaning of stenosis, right? So whenever there is a nerve का गला घोंटा जाता है, whenever there is a compression on the nerve, that is called stenosis. I will show you one image. अभी मैंने आपको जो इमेज दिखाई थी, इसी में आप समझ सकते हैं. I will show you one something here. कि अभी हम आपको बताएंगे कि स्पाइन कहां से निकलती है. द रूट ऑफ द स्पाइन. देखो, पहले ये वर्टिब्रा देखो, स्पाइन कहां से निकलती है. चलिए बताइए, आप लोग बताइएगा. आई एम गिविंग यू ऑप्शंस. हम किसी की पीठ पे हाथ फेरते हैं ना ऐसे, सो हाथ हमारा यहाँ टच होता है. वी आर टचिंग दिस पार्ट, वी आर टचिंग दिस पार्ट. ओके, ऐसे पीठ पे किसी का हाथ फेरोगे तो जो नुकीला नुकीला दिखता है वो दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस. सो वी आर टचिंग द स्पाइनस प्रोसेस. ओके, दिस इज द बॉडी. तो स्पाइनल कॉर्ड कहां से पास होती होगी? दिस इज द, ये पीछे का पार्ट, बैक पार्ट. दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा. कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर स्पाइनल कॉर्ड इज पासिंग? इट इज पासिंग फ्रॉम दिस होल. इसमें से पास होती है स्पाइनल कॉर्ड.
Because of some reason, if there is a compression on the spinal cord, suppose this space is getting narrow, because of some reason, if there is a some problem in the spinal cord, suppose ये spinal cord पास हो रही है इसमें, this is the spinal cord from multiple vertebrae, and if there is any compression on this spinal cord due to narrowing of this space, so it is creating spinal cord stenosis, very challenging problem, बहुत ही challenging problem है. Sometimes there is no any other option other than surgical intervention. It's a very challenging problem, but acupuncture play very important role. Acupuncture बहुत ही शानदार role play करता है. Do you know these all problems? The disc degeneration, the degeneration of the disc, disc का सूख जाना, with the age there is a degeneration of the disc. तो आप देखिए कि जब हमारे वर्टेब्रा के बीच की डिस्क सूखती है तो कैसी हो जाती है. आई विल शो यू. ये देखिए, फर्स्ट यू लुक एट द नॉर्मल डिस्क. पहले आप एक नॉर्मल डिस्क देखिए. ये देखिए, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल नॉर्मल डिस्क. दिस इज द वन बोन वर्टेब्रा, दिस इज द अपर वर्टेब्रा. इनके बीच में ये डिस्क है. इसे कहते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क. ये गादी की तरह होती है, इंटरवर्टिबल डिस्क, राइट. Now, if it is getting degenerated, अगर ये degenerated होने लगी तो कैसी हो जाती है. देखो, सूख गई अंदर ही. This is the degenerated intervertebral disc. जैसे सूख गई है, it's degenerated, drying of the disc. So vertebra are coming to each other, vertebra are coming together, और ऊपर और नीचे की वर्टेब्रा पास में आएगी तो दर्द होगा कि नहीं होगा, पेन होगा कि नहीं होगा. देयर विल बी पेन और नो. तो क्या जब आपके पास पेशेंट आता है आप सब ये चीजें इमेजिन करते हैं कि एक ही ट्रीटमेंट देते हैं हमेशा, वेदर यू आर डूइंग ट्रीटमेंट इन वन ट्रीटमेंट ओनली, or you are thinking, oh, there might be stenosis, there might be degeneration of the disc, there might be herniated disc, there might be spondylosis. क्या आप ये जजमेंट लेते हैं? If you are taking the judgment, then really you are working very nicely. लेकिन आपके लिए अगर सारे पेन एक ही हैं, भाई कमर का दर्द, बस कमर का दर्द, the lower back pain, all you are putting same protocol for every product, might be you need to upgrade that protocol. So now we can see in this image, there is a tumor. Sometimes many person are suffering with the tumor. कई लोगों को स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड की टीबी भी हो रही है आजकल. It's also very common, the TB of the spinal cord and the tumor of the spinal cord. Now we can see this is a very dangerous condition. This is called spondylolisthesis. आपने सुना ही होगा, because we are dealing these patients every time. Spondylolisthesis. किसने नहीं सुना? हाथ ऊपर उठाए. Raise your hand if you have not heard this name. Spondylolisthesis. यानी सबने सुना है. चलिए, good. I will show you the image. So look at here. ये देखिए ऊपर और डिस्क की क्या हालत है. So we can see ये जो डिस्क में जो the upper disc and lower disc, we can see the degeneration. हम डिस्क में degeneration देख सकते हैं. Now you also have to see here. Can you see these part like this? ये these are called bone spur. इन्हें हम कहते हैं spur, bone spur.
bone spur. Spur means the sprouts of the bone, bone के sprout बन जाना. Then upper and lower bone coming near to each other. इस घटना को क्या बोलते हैं? जब ऊपर की और नीचे की हड्डी एक दूसरे के पास आ जाए और बोन इस पर बन जाए, इस घटना को क्या बोलते हैं? बताइए. When the upper bone and the lower bone coming together due to degeneration of the disc and there is a formation of the bone spur. What is the name of this disease? इस बीमारी का नाम क्या है? बताइए. 1 minute. Very good. That is called spondylosis. Spondylosis. The spondylosis means number one, the two bone coming near to each other due to disc degeneration. कि बीच की डिस्क डिजनरेट हो रही. पहले मोटी थी, पहले डिस्क ऐसी थी, पहले डिस्क ऐसी थी मोटी. Now disc is degenerated, disc has become thin like this, very thin. So upper and lower bone coming near to each other. Number two, the formation of the bone spur. Osteophytes. Bone spur or osteophyte. If these two things are present, number one, degeneration of disc. Number two, bone spur. This is called spondylosis. Right? Very good. Gap reduction, osteophyte formation, and disc degeneration. Very nice. Now, one more thing. Suppose one person is having spondylosis. एक व्यक्ति को spondylosis है. The upper vertebra and the lower vertebra coming near to each other. Plus, there is a formation of the bone spur. And suddenly this patient getting jerked. एकदम से इस पेशेंट को धक्का लगा और ये वर्टेब्रा आगे चली गई या पीछे चली गई. दिस वर्टेब्रा इज गोइंग फ्रंट और द बैक ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू ट्रॉमा. गाड़ी बाइक चला रहे थे, गाड़ी धक्के में चलेगी. यू गोइंग इन द कार एंड सडनली some bumper came. So if spondylosis was already there and suddenly the vertebra going front or back, what is the name of this disease? अब समझिए कितना खतरनाक मामला हो गया. अब नर्व खींचेगी. अब आप खुद सोचिए कि नर्व खींचेगी कि नहीं खींचेगी. There will be pulling on the nerve or not. So now in this image we will see now look at the lowermost vertebra. It is slipping. ये देखिए स्लिप हो रही है. It is slipping away, forward slipping. आगे स्लिप हो गई. दिस इज द सैक्रम और ये वर्टेब्रा स्लिप होके आगे आ गई. दैट इज कॉल्ड स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस. ये शब्द हैं. इस घटना को बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस. So what is the difference between spondylitis? Sorry, what is the difference between spondylosis, spondylitis, and spondylolisthesis?
Listhesis. Spondylosis means number one, degeneration of disc. Number two, upper and lower vertebra coming near to each other. Number three, formation of osteophyte. यानी बोन स्पर. So this is called spondylosis. And what is spondylolisthesis? Spondylolisthesis due to trauma, sudden jerk, due to Weick jerk, or the car in the jerk in the car, or anywhere, even in the walking, jerk in the walking, during walk. If upper vertebra and there is a lower vertebra, in between we have disc, but suddenly what's happening? If one vertebra is going little front or back, like see, let's make one more vertebra here. If due to sudden jerk, if one vertebra is moving little forward, so this is called spondylolisthesis. This is very challenging problem. Because the lots of nerve are passing. We can see there are many nerve are passing from here, and there will be compression of the nerve. So mastery in the spine means you have all the idea about this problem. आपको इन सब के बारे में पता है. Then we have heart. About the ankylosing spondylosis, आपने सुना ही होगा. इसके बारे में तो हम बात करेंगे अलग से, right? So today it was the introductory session. Enough for today. Now we'll see you on Monday. नहीं, अब हम मिलेंगे कल यानी Sunday. So we'll talk about the Sunday, means tomorrow. Yes, you can ask the question. Yes, please. If anyone having any question, you can unmute yourself. We will be doing the class number 2 tomorrow. Yes. Tomorrow what time, sir, class? 9:30. Evening? Night. Hello, Yes. sir. Yes, I am a participant of your 6 key course. Yeah. And as per the spine problems, you have talked how to treat the spine with the 6 key. And as per the grandmother rule, let's suppose I have to sedate dryness with the grandmother rule. So sedate dryness is the main action. Then the first, so I have to sedate dryness. Then its first grandmother is heat. So I have to tone heat. And the second grandmother is coldness, because coldness is grandmother of heat. And so I have to sedate coldness. Perfect. If I don't use BR magnets and don't use the needles, I want just use colors, please tell me if I am right. You're absolutely right. Okay. But I will tell you, if the patient is having spondylosis, the main action is, the problem is dryness, right? Sedation, yes. But if the person is having spondylolisthesis, then? Is coldness. Yes, very good. Yes.
But my question If the is, person is having if the person is suffering with a disc bulge, then is humidity. humidity. If the Humidity person is plus having plus spondylitis, then is heat plus plus. yeah, excellent. Yes. Because you are a good professor. Yeah. You are a I good want- student. Yeah. I want to ask you this. To sedate dryness with the color, I have to use the color of its grandmother, which Yeah. is the red color, right? Yes. Okay. And then to increase tonify heat, the same color, which is red. Yeah. And then to sedate coldness, I can use or the same color of heat, because you said you can Yeah. use the same color, or Yeah. also the color of grandmother of coldness, which is yellow. Is that Yeah. correct? Perfect. Okay. And We can use both, either yellow or yes. red. Okay, but so I am mixing grandmother and grandson rule if I use the red on coldness, right? Because I am using the color of heat. Yes, yes, you are absolutely right. We can use either the color of grandmother or the color of grandson to sedate. Okay, and one more question, if I am allowed. Yeah, yeah. Somebody, okay, in the homework, you asked how to treat some problems, like, for example, spondylitis in a certain cervical vertebra. And as per the classification, you told us we can reach the same target in different ways. For example, if the problem is on C7, which is coldness C7, we can select coldness, which is bone system, then a torso, which is humidity, then a back central, which is hotness, and then we arrive to the last cervical, which is coldness, and we make the treatment there. Then you asked, you said also to simplify everything, just choose a coldness bone system, and then go directly on hotness, which is back central, and then you select the cervical area, which is heat. Yeah, And so I then told very easy system. First, you select the bone system, that is the coldness, then directly jump to the spinal cord, that is hotness. hotness, yes. In the But spinal you cord, now spinal cord, we can go to the heat, that is cervical vertebra. yes, but you Then- also told yeah. another thing, another classification, coldness for the bone system. Then, since the C7 is in the neck region, we can select as the neck heat. And then we select hotness, which is back central. Then we don't have to select anymore heat for the cervical column, because we are already in the neck. Is that Yes, correct? that is right. Absolutely right. Okay. Thank you very much, sir. Welcome. Yeah. So thank you so much, everyone. See you tomorrow at the 9:30 p.m. Thank you so much. Let's close the session. Recording will be given to everyone very shortly. Let's close the session.